आइए शुरू ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यूनिट 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो यहाँ पे चैप्टर शुरू होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनली ज्योग्राफी का बेसिक, जिससे कि हमारा न्यू बनेगा, ठीक है। बाकी का पिछला कुछ रिवीजन होगा, बेसिक चीज़ें। तो इसमें सबसे पहला ये आ जाता है कि दिस यूनिट इज डील्स विद ज्योग्राफी एज इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन एज अ साइंस ऑफ स्पेशल attributes. Geography as an integrating discipline as a science of special attributes. So and the next point is branches of geography, importance and physical geography. So this is what geography deals with. Okay, this unit geography actually deals with integrating discipline and science of special attributes. And second point is the branches of geography uh, are importance and other importance of physical geography. So here we can see now we are going to start here geography as a discipline. So first of all, this is the first paragraph. You have studied geography as one of the components of your social sciences courses above after the secondary stage. Okay, this is obvious. You are already aware of some of the phenomena of geographical nature in the world and its different parts. Now you will study geography as an independent subject and learn about the physical environment of the earth, human activities and their interactive relations. Okay, so therefore a pertinent questions you can ask at this stage is why should we study geography. Okay, we live on the surface of earth. Our lives are affected by our surroundings in many ways. We depend on the resources to sustain ourselves in the surrounding areas. Primitive societies subsisted on natural means of subsistence. Okay, that is edible plants and animals. So with this passage of time, we developed the technologies and started producing our food using natural resources such as land, soil, and water. We adjusted our food habits and clothing according to the prevailing weather conditions. There are variations in the natural resource based technological development adaptations with here. We adjusted our food habits and clothing according to the prevailing weather conditions. There are variations in the natural resource space, technological development, adaptations with the modification of physical environment, social organizations, and cultural development. As a student of geography, you should be curious to know about all the phenomena which vary over space. Okay, you learn about the diverse lands. You learn about the diverse lands, people. You learn about diverse lands and people. Okay, you should also be interested in understanding the changes which have taken place over time. Should also be interested in understanding the changes which have been taken place over time. Oh, that is natural. Geography equips you to appreciate the diversity and investigate into the causes responsible for creating such variations over time and space. So, if someone asks you that what geography gives you, okay, then we can say we get in geography equips us
to appreciate diversity and investigate into the causes responsible for creating such variations over time and space. So this is what mean actually everything we see in our surrounding. We have actual reason, okay, scientific reason, that is the watch in our hand. We know this work upon the cell inside it, and uh, this will replace the cell will replace if that re its charge. So this is basic points. You may also study it in your earlier classes. You now come to the next point. You will develop skills to understand the globe converted into maps. Okay, the main point here also is this: we travel far and know about our maps, our geographical areas, which uh, which actually provide us information how and our oceans, uh, waves, um, waves and air and monsoon, etc. वगैरह. So they how they react and how they changes over time. Hmm. So of the earth's surface, the understanding and the skills obtained in modern scientific techniques such as GIS and computer cartography equip you to meaningfully contribute to the national endeavor for development. So here guys, how we can today with the help of many equipments that uh, equip us uh, and makes us eligible to know the weather before it's arrive happens. So as before earthquake we know about information that today is maybe a chances of earthquakes. So this is a normal thing how anyone can guess. That is not a proper guess. Okay, that is not a guess by the scientist. That is the actual fact and probable things, probable circumstances that uh, tells us that this particular phenomenon will be going to happen. Okay, so here we may think about it that now the next question, come to the next questions. Next questions which you may have like to ask is, what is geography? Hmm? What is geography? You know that earth is our home. It is also home of many other creatures, big and small, which live on the earth and sustain. The earth's surface is not uniform. It has variations in its physical features. There are mountains, hills, valleys, plains, plateaus, oceans, lakes, deserts, and wilderness. Okay, so there are mountains, hills, valleys. So there are variations in its social and cultural features too. Hmm? There are villages, cities, roads, railways, ports, markets, etc. Uh, teleport, and many other things, elements created by the human beings across, and also the so many elements that were created by the human beings, that is us, across the entire period of their cultural development. Okay, so these variations provides a clue to the understanding of the relationship between the physical environment and the social and cultural features. The physical environment has provided the stage. Okay, so the physical environment provided the stage on which human societies enacted the drama of their creative skills with the tools and techniques which they invented and evolved in the process of their cultural development. Oh, so what does examples? This could be a funny point here. The physical environment has provided a stage on which human societies enacted the drama of their creative skills. Okay, how we create a drama on our social media. Uh, that is a point. Okay, so this is a way. Uh, Come to the skip that topic. We distracted. Now you should be able to attempt the answer of the question,
posed earlier as to what is geography. In very simple words, it can be said that geography is a description of the earth. Okay, description of earth. The term geography was first coined by Eratosthenes, a Greek scholar, 276 between 276 to 194 BC. The word has been derived from two roots, from Greek language geo, that is earth, and graphos, that is description. So if someone asks what is the meaning of what is geography actually, that means that is it is a term which coined from what is this Eratosthenes. Eratosthenes. Okay, Eratosthenes. So Eratosthenes, and how this how this is made. This is a Greek scholar named by Greek scholar Eratosthenes. ठीक है? So this term geography is coined by Eratosthenes, who was a Greek scholar from between 276 to 194 BC. Okay, the word has been derived, and this word geography is constitutes of two elements, that is geo and graphos, and that is in which the geo is stand for the earth, and graphos means graphos stands for description, that is the description of earth, that is called geography. So now come to the next page. Here is the next page. Put together, they mean description of the earth. So the earth always been seen as the abode of human beings, and thus scholars defined geography as the descriptions of the earth as the abode of human beings. You are aware of the fact that reality is always multifaceted, and the earth is also multidimensional. You are aware of the fact that reality is always multifaceted, hmm? And the earth is also multidimensional. Earth earth, that is why many disciplines from natural sciences such as geology, pedology, oceanography, botany, zoology, and meteorology, and a number of sister disciplines in social sciences such as economics, history, sociology, political science, anthropology, etc., study different aspects of the Earth's surface. Geography is different from other sciences. Okay, in its subject matter and methodology, but at the same time it is closely related to the other disciplines. So as this is what saying, um, let me tell you. Mm, this is actually this is saying that actually that how any science is, as we are going to study human body. Hmm? So first we study the physical behavior, hmm? That is come into physics. After that we come to the inner cells, how the glands are working, and what constitute of his brain, and what other, that's come into biology, huh? Then after that we come into how this his gland reacts and how the hormones secretes, that comes into chemistry. But geography is also related to that, because um, how human this type of this speciality in this speciality human is lived in that area, a special area. That's how black peoples live in Africa, and white peoples in Britain and Europe's other European countries or Western countries. So this is a way by which you can describe that they are sisters of
They are like sisters. So चुप रहो वीडियो में ठीक है. Geography is different from other sciences in its subjects, matter and methodology, but at the same time, it is closely related to the other disciplines. Geography derives its database from all the natural and social sciences and attempts their synthesis. So what is here? Now come to the repeat it. You are aware of the fact that reality is always multifaceted and the earth is also multidimensional. That is why many disciplines from the natural sciences such as geology, pedology, oceanography, botany, geology, and meteorology. Guys, these all are the like sisters of the geography. So the sister and number of sister disciplines in the social sciences such as economics, history, sociology, political sciences, and anthropology, etc., study different aspects of the Earth's surface. Geography is the different from the other sciences and its subjects matter and methodology. So methodology. So it is closely related to the other disciplines. ठीक है? Geography derives its database from all the natural and social sciences and attempts their synthesis. So what this line means? This line means that geography derives its database from the natural sources, natural things, and the social sciences, natural sciences and social sciences, and attempts their synthesis. So geography conclude on the basis of natural and social things. Okay, so this is called a description of Earth's surface. So now come to the next point. We have noted that there exist variations over surface of the Earth in its physical as well as cultural environment. So as a few minutes ago I have discussed it, that how the variations exist over the surface of the earth in its physical as well as cultural environment. As in Kashmir, the peoples live were very stable in the cold environment, but the people living in the Rajasthan or any hot desert cities, they are not comfortable in that cities. That is like Kashmir or European countries. They may take some times, but they are not so comfortable as they as the already peoples are there. So this type of variations come because of geography. This is also called the study of geography, as how a child birth taking birth in Europe is already prepared for that country's environment, and why not to any other countries. So that's a hierarchy or DNA things. So now um, left that topic, come to the next. A number of phenomena are similar and many are dissimilar. A number of phenomena are similar and many are dissimilar. A number of phenomena are similar and many are dissimilar. Oh, this is saying that many features are matching and many are not matching too. It was therefore logical to perceive geography as the study of areal differentiations. So that is, we have we will have to uh, study on the basis of logics to perceive geography as a study of areal differentiation. Okay, thus geography was perceived to study all those phenomena which vary over space. Geography do not study do not study only the variations. So geography do not study only on the variations in the phenomenon over Earth's surface of space, but also study the associations with the other factors which cause these variations. For example, cropping patterns differ from region to region, but these variations in cropping pattern as a phenomenon is related to the variation in soils, in climates, demands in the markets, capacity of the farmer to invest, and technological inputs available to her or him.
So what this line means, that is everyone is capable of doing his or her task. That is also called jiski lathi uski bhais. That similar to these points. So come to the next. Thus, the concern of the geography is to how the find out the causal relationship between any two phenomenon or between more than one phenomenon. A geography explains the phenomena in a frame of cause and effect relationship as. So here what comes it. Repeat. Thus, the concern of geography is to find out the causal relationship between any two phenomenon or between more than one phenomenon. Okay, so this is also called geography. What is it? To find the relationship between any two phenomena or between more than one phenomenon. A geography explains the phenomenon in a frame of cause and effect relationship, not on the chemical basis or biological basis. This only explains the phenomenon in a frame of cause and effect. That is, if if cold is going to arrive in this area, if monsoon is going to come, then why this happen? Where the air come from? Cold air come here, come here. So that is the study that tells us about that air comes from that area. That is called geography. That study comes in the sector of geography. So as it does not only help in the interpretations but also foresees the phenomena in future. The geographical phenomena, both the physical and human, are not static but highly dynamic. The geographical phenomena, both the physical and human, are not static but highly dynamic. They change over time as a result of the interactive processes between events. What does this mean? They change over time. They change over time as a result of the interactive processes between the geographical phenomenon. Both the physical and human are not static but highly dynamic. They change over time as a result of the interactive processes between events. Okay. So wait. With time, changing Earth and untiring and ever active human beings. So what does mean? That means that the geography also tells us the changing environment and the untiring means I don't know, but I hope this that means that the pattern that gives that tells us that what cause is going to happen and what is the reaction, what is the result of that action. So that is actually here they are talking about. The geographical phenomenon, both the physical and human, are not static but highly dynamic. Okay, they change over time as a result of interactive processes between ever as a interactive that change over time as a result of the interactive processes between ever. So come to the next. Changing earth and untiring and ever active human beings, primitives, human science societies were directly dependent on their immediate environment. Geography thus is concerned with the study of nature and human interactions as an integrated whole. What is here? Primitive human societies were directly dependent on their immediate environment. Here this is telling that that primitive humans यानी पुरानी काल के जो लोग थे उनकी societies, human societies were directly dependent on their immediate environment. Okay. Geography thus is concerned with the study of nature of and human interactions as an integrated whole. Okay, that's not a primitive human society. That's not based on primitive human societies.
that is based on wool, that is that the nature and the human interactions as an integrated whole. human is an human is an integral part of nature, and nature has the imprints of human is an integral part of nature, and nature has the imprints of human. Nature has influenced different aspects of human life. Its imprints can be noticed on food. Its imprints can be noted on food, clothing, shelter, and occupations. Human beings have come to terms with nature through adaptations and modification. As you already know, the present society has passed the stage of primitive societies, which were directly dependent on their immediate physical environment for sustenance. Sustenance present societies have modified the natural environment by the inventing and using technology, and thus have expanded the horizon of their operation by appropriating and utilizing the resources provided by nature. So what you are telling? This line telling that human beings have come to terms with the nature through adaptations and modification. That means human comes have come to terms with the nature through adaptation. जैसे जैसे वो अडेप्ट करते गए और अपने आप को उसके हिसाब से मॉडिफाई करते गए. As you already know, the present societies has passed the stage of primitive societies. जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, द प्रेजेंट सोसाइटी, एज वी ऑलरेडी नो that the present society has passed the stage of primitive societies, which were directly dependent on their immediate physical environment. Hmm. They are, they were already dependent on, yeah, that is our ancestors were directly dependent on their immediate physical environment. You may also notice that our in the recently in the recent till the recent generation, even right now, we are dependent, somehow, anyhow, dependent on nature, immediate natural environment. As we can say example that in terms of politics, in terms of many other things, uh, we think that only upper caste people will have to uh, make a role in politics. As in the Bihar result elections, we see that only upper caste peoples were there in the list. That's hurt inside somehow. Everyone should get equal opportunities, and currently, I am when I am teaching it. Actually, I am studying it here. We can I have to discuss one thing that in Bihar there is a lot of violence against BJP and police. Actually, BJP. So come to the topic. Present societies have modified their natural environment by inventing and using technology. So present societies have modified their natural environment by inventing and using technology, and thus have expanded the horizon of their operation by appropriating and utilizing the resources provided by nature. जैसे कि कैमरा आ गया, फ़ोन आ गया, लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया, कार आ गया, तो सारी चीज़ को रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ करते गए, अपने आप को उसके हिसाब से एक्सपेंड करते गए, अपना नज़रिया को बदलते गए, और उसके हिसाब से अपने आप को फिट करते गए उस इन्वायरमेंट पे. ठीक है. विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो किया, ह्यूमन बींग्स वेर एबल टू लूज इन द सैकल्स ऑफ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट. जैसे जैसे यानी कि वो लोग अपना रूट को, यानी कि जो बकवास में था, झूठ मूठ का छोटा मोड़ा, यानी कि बकवास नहीं, यानी कि जब उसका काम चलता था तो उससे किया, और अब नहीं चलता है तो छोड़ दिया यार, उसको क्या फ़ायदा. उससे अच्छा मेरे पास ऐसे कि बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी नहीं चलाएगा, बैलगाड़ी अब क्यों चलाएगा. कार आ गया तो कार चलाएगा, बाइक चलाएगा. ठीक है. तो ऐसे करके है. तो यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी हेल्प इन रिड्यूसिंग द हार्नेसेस ऑफ लेबर,
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया, ये मेहनत को बर्बाद होने से, यानी कि बेकार होने से रोका। इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी, यानी कि काम का क्षमता बढ़ाया। जैसे कि पहले कोई फसल उगाता था, उसको रोकने के लिए कोई तरीका नहीं है, बाद में लोग डैम बनाने दिया, उसको बांध बनाने लगा। यानी कि ये भी तो एक तरह का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ही है ना, जो लोग समझा कि यार ऐसे करने से नहीं होगा। हम लोग को थोड़ा सा, जैसे कि कोई बीज खेत में डाल देता था हर साल, इस बार वो अच्छा क्वालिटी का बीज उसको उपजा करके और अब जो उपजा रहा है, ठीक है। तो वो एक तरह से टेक्नोलॉजिकल इन्वांसमेंट में ही आ गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड increase efficiency from the given resources and provided leisure to human beings to attend to higher needs of life. It also increased the scale of productions and also mobility of labor. Okay? The interaction between the physical environment and human beings has been very successfully described by a poet in the following dialogue between human and nature god. The interaction between physical environment and human beings has been very succinctly described by a poet in the following dialogue between human and nature god. You created, that is this point, this means this point is going to describes about how the a poet describes the relation between the human and nature. Nature is also called a god, okay, in the past time. So now let us read it. You created the soil, I created the cup. You created night, I created the lamp. You created wilderness, hilly terrains, and deserts. I created flower beds and gardens. Human beings have claimed their contribution using human beings, यहाँ लाइन खत्म हो गया देखिए. Human beings have claimed their contribution using natural resources with the help of technology. With the help of technology, human beings moved from a stage of necessary to a stage of freedom. A stage of freedom. They have put imprints everywhere and created new possibilities in collaboration with nature. Thus, we will now find humanized nature and naturalized human beings and geography studies. These interactive relationships, the space. Sorry. Come to the back point. Thus, we know now find humanized nature and naturalized human beings and geography studies these interactive relationships. Okay, the space got organized with the help of means of transportation and communication network. These link routes and nodes settlements of all types of hierarchies integrated the space and integrated the space and gradually it got organized as a social science discipline. Geography studies the spatial organization and spatial integration also. Actually, what geography studies? Sorry. What actually geography studies? Geography actually studies the spatial organization and spatial integration. Geography as a discipline is concerned with three sets of questions. Some questions are related to the identification of the pattern of natural and cultural features as found over the surface of the earth. Okay, these are the questions about these are the questions about these are the questions about एक सेकंड थोड़ा सा दिक्कत हुआ है यार. थोड़ा सा आप लोग रुकना, थोड़ा सा वेट फॉर ए सेकंड.
Sorry guys for the disturbance. I was going to uh, abolish the someone's right, actually, that is permission of one app, which interrupted me while the live video. So I stopped that. So come to the next point. Geography as a discipline is concerned with the three sets of questions. Geography as a discipline is concerned with the three sets of questions. Some questions are related to the identification of the patterns of natural and cultural features as found over the surface of the earth. That is, जो सबसे पहला जो पैटर्न आता है नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स as found over the surface of the earth. These are the questions about what somewhat some questions are related to the distribution of natural and human cultural features over surface of the earth. आप लोग क्या इसके बारे में कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं अपने मन में? सोच सकते हो? सोचो, सोच सकते हो तो सोचो. देखो यहाँ पे बोल रहा है some questions are related to the identification of the patterns of the natural and cultural features. देखो, नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. जैसे कि यहाँ पे यानी कि कश्मीर में ज़्यादा ठंडा क्यों पड़ता है? क्यों पड़ता है जी, बताइए क्यों पड़ता है? ग्लेशियर है वहाँ पे, बादल टकराता है, वहीं पे बर्फ गिरता है, वहीं पे ठंडा होता है. ठीक है, उसी तरह से है, उसी तरह से हमारा इधर भी है. जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल फीचर्स में क्या है कि कल्चरल फीचर में जैसे कि कोई का कहीं कहीं कल्चरल फीचर्स भी इससे अफेक्ट करता है कि मान लीजिए कि कैसे करके कोई आया हुआ है पहले से, यानी कि कोई पैटर्न चलते आ रहा है, तो उसका पीछे कोई साइंटिफिक फीचर्स यानी कि कुछ रीज़न होता है, जियोग्राफिकल रीजन होता है. जैसे कि एक कल्चरल फीचर्स में सबसे बड़ा पॉइंट हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या दे सकते हैं, हाँ, जैसे कि डेड बॉडीज़ को करते हैं ना, डेड बॉडीज़ को लास्ट वाला क्रियाक्रम कर जो कहते हैं, उसमें देखिए जो जिसका जो कहाँ से कल्चर से आया है उसी के हिसाब से उसका रूल बना हुआ है. जैसे कि कोई मुस्लिम है, अगर कोई मुसलमान है, तो वो लोग पहले वो लोग ऐसे इलाके में रहते थे कि वहाँ पे क्या होता था कि उन लोगों के पास लकड़ी नहीं होता था, ना पानी होता था, तो उन लोगों के पास जगह होता था, खाली मैदान आराम से होता था, तो वो लोग खाली मैदान को ही कोड़ के उसका अंदर दफन करना का प्रथा बन गया वहाँ से. ठीक है, ठीक है. हिंदू लोग का है इंडिया में कि इंडिया में क्या है कि वो लोग लकड़ी था आराम से, लकड़ी जलाना, लकड़ी का रिसोर्स, लकड़ी आसानी से उपलब्ध था और लकड़ी से जलाना आसान था, लकड़ी जलाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया था हर चीज़ को. तो इसीलिए लोग डेड बॉडीज़ को अंतिम क्रियाक्रम के समय उसको लकड़ी से जलाने लगा. ठीक है, ये यहाँ का प्रथा बन गया. और वही देखिए, वही एक ईरान था, यानी कि ऐसे ही एक कोई एक अलग देश है, ईसाई धर्म में शायद कि कौन सा धर्म था, तो उसमें क्या करते थे वो लोग, जैसे कि वो लोग अपने यानी कि जो बॉडी है, डेड बॉडी जो मर गया, उसको एक खाली टीला के पास रख के आ जाते थे जहाँ कोई आता जाता नहीं है, ताकि वहाँ पे जहाँ पे वहाँ पे चील कौए उसे नोच के उसको बॉडी को ख़त्म कर दें. चील चील वगैरह खा हो गए उसको ख़त्म कर देते थे. तो उसका पीछे क्या रीज़न था, ना वहाँ पे ठीक से दफनाने के लिए जगह हुआ करता था, क्योंकि वहाँ का मट्टी उस लायक था नहीं. ठीक है, और पानी का व्यवस्था था नहीं कि वो लोग पानी में बहा पाएँ, और साथ में लकड़ी भी था नहीं कि वो लोग जला पाएँ, तो इसलिए वहाँ पे ये प्रथा बन गया. वही कॉफिन में जो डाल के डाल देते हैं, तो वो क्यों हुआ कि जैसे कि वो लोग का एरिया के समय उस समय क्या था कि वो लोग जिस जगह पे था वहाँ पे बहुत ठंड होता था. ठीक है, तो ठंड होने के कारण क्या होता था, ठंड होने के कारण जैसे कि डेड बॉडीज़ है, तो उसको मान लेते ऐसे ऐसे दफना देगा तो वो सड़ेगा ही नहीं, उसका डिकम्पोज ही नहीं होगा. तो वो लोग क्या करता था, डेड बॉडीज़ को वो लोग डेड बॉडीज़ को क्या करता था, कॉफिन के अंदर डाल देता था, ताकि कॉफिन का अंदर तो गर्म रहेगा, बॉडी गर्म होगा, तो कॉफिन का अंदर तो हल्का गर्म होगा ना, तो तब हल्का जल्दी डिकम्पोज होगा, गर्म होकर रहेगा. तो इसलिए कॉफ़ी में आना, फिर कॉफ़ी में लोग एक तरह तरह के चीज़ डालने लगा कि भाई अच्छा अच्छा, यानी कि कुछ लोग सोना डाल देता था, कुछ लोग कपड़ा डाल देता था, कुछ लोग गिफ्ट आइटम डाल देता था, जो सोचते थे कि ये शायद एक प्रिजम्पशन बन गया कि शायद ये उसके साथ ही जाएगा.
लेकिन ऐसा कौन जानता है क्या कहाँ जाएगा, ठीक है। तो आइए उस टॉपिक पर हम लोग को नहीं भटकना है, हम लोग को यही जानना है कि कल्चरल फीचर्स क्या आ गया, कल्चरल फीचर्स क्यों आया। क्योंकि जैसा जिसके हिसाब से कल्चर कैसे बना, जैसा जगह के हिसाब से, जैसा आदमी के सोच के हिसाब से, जैसा समय के हिसाब से, जैसे हालात के हिसाब से जो इंसान ने अपनाया वही उसका कल्चरल फीचर बन गया, और वही उसका पैटर्न में दिखने लगा, और उसका एक हायरचिकल पैटर्न बन गया, ठीक है। और नेचुरल फीचर्स में भी यही आता रहता है, क्योंकि वो लोग जैसे कि दफनाने लगे तो लगभग सब कुछ दफनाएगा ही भाई। अब दफनाएगा तो उसके लिए वो लोग का भी एक रूल चलेगा, प्रथा चलेगा, उसमें भी रहेगा कि दफना दिया जाता है या फिर जो भी किया जाता है, ठीक है। सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर्स ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो हम लोग वैसे पिछले वाला एग्जाम्पल में इस बात को समझ ही लिए, टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चरल। तो यानी कि कुछ जगहों पर क्या हुआ कि कल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। जैसे कि चाय हमारे यहाँ की नहीं है, लेकिन जो यूनानी जो आए वहाँ से हम लोग का देश घूमने के लिए, उन लोगों को चाय लाया, लेकिन चाय यहाँ के लोगों को इतना पसंद आया कि चाय चाय ही चाय हो गया, ठीक है, डोली चाय हो गया, ठीक है। तो ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ, कल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ इस बीच में। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ कि जैसे कि जिसको जो पसंद आया, जिसको लगा कि नहीं भाई ये जो कल्चर है यहाँ का जो है ये हम लोग को अच्छा लग रहा है, ये हम लोग को फिट कर रहा है, तो उसको हम अडोप्ट कर लिए। ऐसे कि हम लोग बिहार वगैरह में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे मैंने खुद अपने गांव में देखा है कि बहुत सारे मुस्लिम महिलाएं भी छठ करती हैं। अब बोलिए, ऐसा कि छठ छठ क्यों किया जाता है? आप लोग जानते होंगे छठ क्यों किया जाता है? किसी के पास पता नहीं, इससे कोई बता तो नहीं पाएगा, कोई है ही नहीं तो क्या बताएगा, ठीक है। तो छठ में क्या होता है, छठ क्यों किया जाता है? छठ किया जाता है कि एक एक समय था कि एक राजा था, तो उसका बहुत वर्षों से पुत्र नहीं हो रहा था, लेकिन पुत्र हुआ तो यज्ञ करने लगा वो लोग। तो वो लोग यज्ञ कर रहा ही रहा था, तब तक पता चला कि बच्चा जो है मरा हुआ है शायद, बच्चा मृत पैदा हुआ, ठीक है। अब मान लेते हैं बच्चा मृत पैदा हुआ है, तो फिर भी तो वो लोग फिर से पूरा रोआ रोआ गाया और चला गया उसको दफन करने। जब जा रहा था तो तभी वो कुछ ऐसे ही की, छठ वगैरह की ऐसी कुछ की, वो माता को अर्जी थी, तो षष्ठी माता नाम की एक माता आई, तो वो बताइए अपना नाम वगैरह, षष्ठी माता है हम, तो इस टाइप से बोला जाता है। तो उस दिन से यानी कि लोग उसी दिन से वहाँ से छठ शुरू हुआ। और ये एक्चुअली लगभग ये पहले जो बिहार जिस एरिया में था ना, उसी एरिया का कोई राजा था, उसका नाम हमको याद नहीं है, लेकिन वही राजा के कारण छठ शुरू हुआ, क्योंकि षष्ठी माता ने उसके बालक को जिंदा कर दिया वापस से, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा इधर तो भटकना नहीं है, ठीक है। आपने गोल पे फोकस रखना है, ठीक है। रील्स तो दिन में बना ही रहे हैं। टेकन टुगेदर, both these questions take care of distributional and locational aspects of the natural. Taken together, both these questions take care of distribution and local aspects of the natural and cultural features. These questions provided in inventorize the information of what features and where located. Okay, तो यही बात जो हमें अभी बताएं पिछले वाले बात में, यानी कि लाइन में, वही है। इट वॉज अ वेरी पॉपुलर अप्रोच ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। These two questions did not make geography a scientific discipline till the third question was added. Third question, what is that? The third question is related to the explanation of the causal relationship between the features and the processes and phenomena. This aspect of geography is related to the questions why. Understand? That is, they are saying that if we know the culture, root, culture benefits, then the third question is also why this is culture is adopted, and what is the features of it, what we get benefit from this using these features, such as those people who were uh, buried the dead bodies inside the coffins. What is the benefit of that? The benefit lies that on the scientific feature that body decomposes fastly if they do this, then only buried by the with the cloth.
So a that is a relation, and the third question, this is the actual cause, and this is the third question of geography phenomena. ठीक है. Geography as a discipline is related to the space and takes note of special characteristics and attributes. It studies the pattern of distribution, location, and concentration of phenomena over space and interprets them, providing explanations for these patterns. It takes note of the associations and the interrelationships between the phenomenon over space and interprets from them, from providing explanation for these patterns. It also takes note of the association and interrelations between the phenomenon resulting from the dynamic interaction between human beings and their physical environment. So, if someone asks you, what is geography? What is the exact explanation? That is, brief explanation of geography is a discipline in is related to this as a discipline is related to the space and takes note of spatial characteristics and attributes. It studies the pattern of distribution, location, and concentration of phenomena over space and interprets them, providing explanations for these patterns. It takes note of the associations and interrelationships between the phenomena over space and interprets them, providing explanation for these patterns. Okay. It also takes note of the association and interrelationships between the phenomena resulting from the dynamic interaction between human beings and their फिजिकल एनवायरनमेंट. इसका सीधा सीधा अगर बात हम बोलें तो सीधे बात समझ लो कि ज्योग्राफी जो है कारण भी जानता है, कारण पूछता है, कारण क्यों हुआ पूछता है, कारण कब से हो रहा है पूछता है, और कारण से क्या उसका असर पड़ता है यही पूछता है. और यही बोलता है कि इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया उसका नाम भी बताओ. रिकॉर्ड भी तो रखता है भाई. ये बोल रहा है ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन. Geography as a integrating discipline. So geography is a discipline of synthesis. Okay, the geography is a in attempts of is attempt it attempts spatial synthesis, and history attempts temporal synthesis. Okay, and geography attempts spatial synthesis and history attempts temporal synthesis. ऐसे यानी कि ये क्या, इट अप्रोच इज होलिस्टिक इन नेचर. देखो, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का यहाँ पे बात हुआ है. ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या करता है कि उसका क्यों हो रहा है ये बताता है. ठीक है, क्यों हो रहा है ये बताता है. ठीक है, क्यों हो रहा है उसका उसका पीछे बताता है. और हिस्ट्री क्या बताता है कि हुआ लेकिन रफली बताता है कि इस कारण से हुआ. जैसे कि लड़ाई हुआ, ट्रिपटाइट युद्ध हुआ, ट्रिपटाइट वॉर हुआ, किस लिए हुआ, पानी के लिए हुआ. ठीक है, पानी के लिए हुआ. तो ये ज्योग्राफी में भी आ सकता है लेकिन हिस्ट्री में भी आ सकता है. ये एग्जाम्पल सही नहीं हुआ. इस टाइप से एग्जाम्पल होता है जैसे कि इन्वायरमेंट फैक्टली या फिर कुछ साइंटिफिक रीजन जैसे कि प्लेस के कारण, ज्योग्राफी के कारण. जैसे कि राजधानी के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ था. एक्चुअली ज्योग्राफी में ही आ सकता है वो भी, जो कि ट्रिपटाइट वार हुआ था. तो वो ट्रिपटाइट वार क्यों हुआ था? एक्चुअली हुआ था वाटर के लिए, वाटर रिसोर्सेज के लिए. अगर वो मिल जाता राज्य जिसकी लड़ाई होता था ट्रिपटाइट वार में, तो हमारा क्या फ़ायदा होता? जो जीतता उसको वो पूरा मिल जाता और उसके रिसोर्सेज के बेस पे उसके हाथी के लिए अच्छा नदी मिल जाता, अच्छा फसल के लिए उसका सारा पानी वो यूज़ कर सकता था. ये बात था, इसलिए उसके लिए वॉर होता था. ठीक है, बहुत बड़ा संघर्ष चला, इसी को बोलते हैं ट्रिपटाइट वार बोलते हैं. ठीक है, तो ज्योग्राफी इज ए डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस. इट अटेम्प्ट्स स्पेशल सिंथेसिस एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टेम्पोरल. ये फिलहाल के लिए देख लेता है कि क्या हुआ है, लेकिन ज्योग्राफी उसको बांट कर देखता है
कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। And history attempts temporal synthesis. Its approach is holistic in nature. It recognizes the fact that the world is a system of interdependencies. It approaches the holistic nature. It recognizes the fact that the world is a system of interdependencies. Okay, so actually, this saying that the world is actually interdependent, and that is everyone is actually dependent on each other. That is how what happened if someone says that only tomorrow, that if the politicians were resigned, is the Supreme Court can ruin the government singly, and is he capable of running that government peacefully? It is not. If the soldiers were come return to their home and resign from their posts, do you think only police and politicians or supreme law can run this country peacefully? Not now. That is everyone interdependent on each other. This is the point. So friends, come to the next point without wasting time. The present world is being perceived as a global village. The present world is being perceived as a global village. The distance have been reduced by better means of transportation, increasing accessibility. The audio visual media and information technology have enriched the database. Technology has provided better chances of monitoring natural phenomena as well as the economic and social parameters. Geography, as an integrating discipline, has interfaced with numerous natural and social sciences. All these sciences, whether natural or social, have one basic objectives of understanding the reality. Okay, all the sciences, whether natural or social, have one basic objective of understanding the reality. Geography attempts to comprehend the association of phenomenon as a result in sections of reality. Here what is saying, geography attempts to comprehend the association of phenomena as a as related in sections of reality. Figure 1.1. Where is the figure 1.1? Figure 1.1. Where is the figure 1.1? 1.1. 1.1. Where is the figure 1.1? That is not available, guys. We are in this page. No, I have read that. Figure 1.1. This is the point here. Figure 1.1. So here the objective, social of objective, or the social have one basic objective of understanding the reality. Geography attempts to comprehend the association, apprehend the associations of phenomenon as a result as related in sections of reality. Figure 1.1 shows the relationship of geography with other sciences. Every discipline concerned with scientific knowledge is linked with geography, as many of their elements vary over space. As many of their elements vary over the space. If someone want to comments, then he can. I allowed comments. Geography helps is understanding the reality in totality in its spatial perspective. Every discipline concerned with scientific knowledge is linked with geography, as many of their elements vary over space. Geography helps in understanding the reality in totality
In its spatial perspective, geography thus not only takes note of the differences in the phenomenon from place to place, but integrates them holistically, which may be different at other places. A geographer is required to have a broad understanding of all the related fields to be able to logically integrate them. These integrations can be understood with some examples. Geography influences historical events. Geography influences historical events. A spatial distance itself itself has been a very potent factor to alter the courses of history of the world. A special depth provided reference to many countries, particularly in the last century. In traditional warfare, countries with a large size in area gain the time at the cost of space. The defense provided by oceanic expanse around the countries of the New World has protected them from wars being imposed on their soil. If we look at the historical events world over, each one of them can be interpreted geographically. If we look at historical events world over, each world over, each one of them can be interpreted geographically. In India, Himalayas have acted as great barriers and provided protection, but the passes provided routes to the migrants and invaders from Central Asia. समझ रहे हो? The sea coast has encouraged contact with the people from East and Southeast Asia, Europe and Africa. यहाँ पे क्या बोल रहा है? The sea coast has encouraged contact with the people from East and Southeast Asia. यानी कि इनकोरेज यानी कि कॉन्टैक्ट को बढ़ाता है, ठीक है। ठीक है। Navigation technology helped European countries to colonize a number of countries of Asia and Africa, including India, as they got accessibility to our resources. So navigation technology helped European countries to colonize a number of countries of Asia and Africa. This is a humorous point, as this is happened already, that European countries colonize Asia and Africa, including India, as they got accessibility. What is that? Our resources. Acha, what they got accessibility through oceans. The geographical factors have modified with the course of history in different parts of the world. The geographical factors have modified the course of history. Uh, the geographical factors have modified the course of history in different parts of the world. Even geographical phenomena undergoes change through time and can be explained temporarily, really, temporarily, ठीक है, temporarily. Every geographical phenomena undergoes change through time and can be explained temporarily. The change in landforms, climate, vegetation, economic activities, occupations, and cultural developments have followed a definite historical course. Many geographical features results from decision. Many geographical features results from decision-making processes by different institutions at a particular point of time. What does my line means? The many geographical features result from the decision. Many geographical features result from the decision-making process by different institutions as different institutions at a particular point of time. It is possible to convert. It is possible to convert time in terms of space and space in terms of time. For example, it can be said that place A is 15 km from place B. Or alternatively,
It can also be said that place is 2 hours away if one travels by plane, और 17 hours away if one. ये बकवास है यार, ये देखो, ये बकवास वाला टाइप आ गया. Figure 1 amplified depicts the linkages of geography with the different natural and social sciences. This linkage can be put under two segments: physical geography and natural sciences. अब देखो, अब आया मेन पॉइंट, जैसे कि जहाँ से शुरू हो रहा है. एक्चुअली यहाँ से अब हमारा इंफॉर्मेशन बेसिस पे शुरू हो जाएगा. तो अब बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस की. ठीक है. तो ऑल द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एज शोन इन फिगर 1.1 have all the branches of physical geography as shown in the figure 1.1 have interfaced with the natural sciences. The traditional physical geography is linked with geology, meteorology, hydrology, and pedology, and thus geomorphology, climatology, oceanography, and soil geography, respectively, have very close link with the natural sciences as these derive their data from these sciences. Biogeography is closely related to botany, geology, as well as ecology, as human beings are located in different locations niche. And this is what once tells that biogeography is closely related to botany. Biogeography is the biogeography is closely related to the botany, geology. This topic is quite. The traditional features they see from the third line of the physical geography and natural sciences. Third point. Hmm. The traditional physical. Wait. So, ठीक है. तो यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ. ठीक है, देख लो. ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी. तो ये देखो, ये जो है ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी. ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी में ये बता रहा है लिंक्ड विद द जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, यानी कि जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड पेडोलॉजी एंड दस जियोमॉर्फोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी. उसके बाद में ये जितना भी है, ये जितना भी बता रहा है ये, तो ये एक है. एंड दस जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड उसे और पतला करना होगा. बता रहे हैं यार, ये हो जा रहा है. जैसे कि ये हो गया जियोलॉजी, हो गया मेट्रोलॉजी, हो गया हाइड्रोलॉजी. तो ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी लिंक्ड विथ, देखो बोल रहा है कि ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी जो है हम लोग का, वो लिंक है एक्चुअली जियोलॉजी से. ये तो ऑब्वियस है. मेट्रोलॉजी से, ठीक है. हाइड्रोलॉजी से हो गया. अब ये पेडोलॉजी क्या होता है? अब देखो, पेडोलॉजी का मतलब मुझे नहीं पता है, मैं इसे बाद में कभी जान लूँगा, या फिर बाद में मुझे. जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में तुमने सुना ही है. जियोमॉर्फोलॉजी हो गया. क्लाइमेटोलॉजी तो सुनते ही पता चल रहा है. ओशिनोग्राफी के बारे में हमें पता चल रहा है. सॉइल जियोग्राफी के बारे में. तो ये सब लिंक्ड हैं एक दूसरे से. ठीक है, लिंक्ड हैं. ऐसा कि पानी, जैसे कि इस साल पानी ज़्यादा हुआ, पानी ज़्यादा हुआ, तो इसमें हम जब ज्योग्राफी खोजेंगे पानी ज़्यादा क्यों हुआ, तो इसमें नॉर्मल ज्योग्राफी भी मिलेगा, क्लाइमेटोलॉजी मिलेगा, जियोमॉर्फोलॉजी भी मिलेगा, सॉइल जियोग्राफी तब मिलेगा जब पैदावार कम हुआ या ज़्यादा हुआ, इस पे हुआ. ठीक है. और ओशिनोग्राफी भी मिलेगा. ओशिनोग्राफी एक्चुअली इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी समहाउ, यानी थोड़ा मोड़ा तो इसका इफेक्ट इसमें भी होगा. ठीक है. रेस्पेक्टिवली हैव वेरी क्लोज लिंक इन द नेचुरल साइंसेस. तो क्या बोल रहा है, इन सब का
बहुत क्लोज लिंक है with the natural sciences derived and their data from these sciences. Biogeography is closely related, closely related, closely related to this. Biogeography is closely related to botany, geology, as well as ecology. Botany, geology, ecology. यानी कि ये क्या हो गया, ये सब तो था किससे कनेक्टेड था, तो जियोलॉजी से था, मेट्रोलॉजी से था, हाइड्रोलॉजी से था, और पेडोलॉजी से था, और जियोमॉर्फोलॉजी था, क्लाइमेटोलॉजी था, ओशिनोग्राफी था, और सॉइल जियोग्राफी था। और ये सब का क्या, ये सब का नेचुरल साइंसेज से बहुत ज़्यादा क्लोज लिंक था। ठीक है, तो ये हटाओ, ठीक है, ये लाइन हटाओ। अब ये लाइन हटा दी हम लोग। अब हम लोग देखेंगे क्या कि अब देखो बायोजियोग्राफी बोल रहा है, बायोजियोग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू बॉटनी। बायोजियोग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू बॉटनी। बायोजियोग्राफी क्लोजली रिलेटेड था किससे, किससे है रिलेटेड, बॉटनी से है, जूलॉजी से है, इकोलॉजी से है, इकोलॉजी एज ह्यूमन बींग्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, तो इस बात से बोल रहा है कि एज ह्यूमन बींग्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेशंस नेचर, a geographer a geographer should a geographer should have some proficiency, a geographer have some proficiency तो इसमें हम वापस कर देते हैं। अब आते हैं, इसका हटाइए, ये ला हट गया, ये ला खत्म हो गया। यहाँ बोल रहा है a geographer should have some proficiency in mathematics and art and particularly in drawing maps। यानी कि कोई जियोग्राफर है तो उसको किस चीज़ में प्रोफिशिएंसी रहेगा, वो इस चीज़ में प्रोफिशिएंसी रहेगा कि वो आसानी से, a geographer has should have proficiency in mathematics and art particularly in drawing maps। ठीक है, तो उसका प्रोफिशिएंसी इस चीज़ में रहेगा। लेकिन ये हो गया, अब लेकिन यहाँ से हो गया ख़त्म ये। अब देखिए, जियोग्राफी इज़ वेरी मच लिंक्ड विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल locations and deals with the latitudes deals with the latitudes and longitudes। मैं इसे वाइड कर दूँ क्या बैकग्राउंड को, छोड़ो रहने देता हूँ। ठीक है, देखो जियोग्राफी इज वेरी मच लिंक्ड विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशंस एंड डील्स विद द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये भी बात ध्यान देने वाला है। ए जियोग्राफी should have some proficiency in mathematical art। Geography is very much linked with the study of astronomical locations and deals with the latitudes and longitudes। तो latitudes और longitudes के बारे में तो पता ही होगा। लैटिट्यूड हो गया हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूड हो गया परपेंडिकुलर, इस टाइप से बोल सकते हैं इसको, यानी कि हॉरिजॉन्टल या फिर परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर जो बोल सकते हैं पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो। द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। तो अगर कोई पूछेगा कि हम लोग का अर्थ का शेप कैसा है, तो कैसा है, जियोइड है। कैसा है, जियोइड है, जियोइड है। बट द बेसिक टूल ऑफ ए जियोग्राफर मैप is a map which is two dimensional। The basic tool of a geographer is a map which is two dimensional representation of the earth। यानी कि एक ऐसा अर्थ होना चाहिए जिसका कि वो ना दो रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसे मैप इन विच टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो सके ऑफ द अर्थ, The problem of converting geoids into the two dimensions can be tackled by projections constructed geographically or mathematically। Okay, the problem of converting geoids into two dimensions can be tackled by projections
कंस्ट्रक्टेड ग्राफिकली और मैथमेटिकली। तो उसमें जैसे कि बनाया रहता है कि हाँ, जैसे कि वहाँ बनाया रहता है कि किस तरीके से, जैसे कि ये वाला एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, तो इसमें से बनाया रहता है, ठीक है, जैसे कि इंडिया है तो ये बनाया रहता है, ठीक है। तो ये जो बनाया रहेगा, तो इसमें पता है, इस सबको पता है कि भाई इतना डिग्री इतना नंबर पे इतना नंबर पे काटता है। तो ये जो है ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है। ये सबसे ये यही है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का ये समानांतर, जिससे कि हम लोग नोटिफाई करते हैं कि इतना इतना ये है, ठीक है, जो भी है। क्षैतिज रेखा एक होता है और एक होता है एक्सियल, ठीक है। तो उसको बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि 9 वाला क्लास में, ठीक है, 9 वाला में भी था। तो अभी हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये वाला, कि तो ये बोला क्या लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। तो द कार्टोग्राफिक जियोग्राफिकली ट्रैकल जियोग्राफिकली और देखो जियोग्राफिकली और मैथमेटिकली the cartographic and quantitative techniques require sufficient proficiency in mathematics, statistics and others। तो यहाँ पे द कार्टोग्राफर को, अगर कोई कार्टोग्राफर है तो उसका किसी चीज़ में टेक्निक्स में किस में होना चाहिए प्रोफिशिएंसी, मैथमेटिक्स में होगा, स्टैटिक्स में होगा और बाकी अदर थिंग्स में होगा, जैसा कि देखा जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स maps are prepared through artistic imagination, making sketches, mental maps and cartographic work require proficiency in arts। तो इकोनॉमिक्स उसमें ऐड हो गया, ठीक है, कार्टोग्राफर में। और अब मान लेते हैं ये मैप्स वाला आ गया, मैप्स आर प्रिपेयर थ्रू आर्टिस्टिक इमेजिनेशन, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस है, आर्टिस्टिक इमेजिनेशन से बनाया जाता है। मेकिंग स्केचेस mental maps एंड कार्टोग्राफिक वर्क रिक्वायर प्रोफिशिएंसी इन आर्ट्स। जैसे हम लोग बना देखते हैं, मानचित्र देखते हैं, तो वो बनाने में बस ऐसा नहीं है बस ऐसे हेलीकॉप्टर से देख लिया भाई ऐसा ऐसा बना दो, ऐसा नहीं है। वो एक रात का खेला नहीं है, कितना दिन लगा होगा उसको ये ऑब्जर्व करने में, कितना तरह का साइंस लगा उसको ऑब्जर्व करने में, कितना नापा होगा, कितना एरिया है, क्या है वगैरह है, तब जाके वो बताता है कि इतना एरिया है, इतना का रेंज में इतना है, ये है वगैरह है बॉर्डर। फिर भी डिस्प्यूट है, होता है कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली जो फिक्स्ड माप माना गया है वो है। अब कोई जम्मू कश्मीर का लेके लड़ते रहते तो वो बात अलग है भाई, ठीक है। Geography and social sciences. A social science sketched in figure 1.1 has interface with one branch of geography. A social science sketched in figure 1.1 has interface with one branch of geography. Geography and social sciences. अब बोल रहा है जियोग्राफी और सोशल साइंसेस, जैसे कि ज्योग्राफी और सोशल साइंसेस के बारे में बता रहा है। जियोग्राफी एंड सोशल साइंसेस, ये सोशल साइंस स्केच्ड इज, यहाँ बोल रहा है कि each social science sketched in figure 1.1 has interface with one branch of geography। अब देखो फिगर 1.1 पे हम लोग आते हैं, फिगर 1.1 देखो, फिगर 1.1 देखो, फिगर 1.1 यही है क्या यार, देखो फिगर 1.1 है। अब देखो इसको हमें बताना पड़ेगा यार, थोड़ा सा अच्छा से देखो। देखो जैसे कि इसमें बताया है, सबसे पहला हम लोग को दिखा रहा है कि यहाँ पे है, सारा पार्ट है, मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जूलॉजी, इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, जियोग्राफिकल थॉट्स, कल्चरल जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, इकोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फाइटोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी। तो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये सब को बता रहा है, जितना भी है इसी का पार्ट है, जियोग्राफी का पार्ट है, ठीक है, ब्रांचेस है। तो
छोड़ो उसको, हम लोग आते हैं कहाँ टाइम पे, बिना टाइम पास किए समझना है हम लोग को, बस किस तरह से निकलना है कि ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए इसमें, जैसे कि हम लोग अवेयर ना हो, ताकि वो एग्जाम में आए तो उसमें हम लोग बना के लिख सके कुछ भी, ठीक है, बना दें। Every discipline has a philosophy which is reason datory datory ये तो पहली बार आ रहा है यार, reason datory datory what the discipline। तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि द डिसिप्लिन हैज़ अ फिलोसफी विच इज़ reason datory और द डिसिप्लिन, ये इसका लाइन का मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी, मुझे भी नहीं पता चलता। एवरी डिसिप्लिन हैज़ फिलोसफी which is the reason detail for that discipline। Philosophy provides roots to a discipline and in the process of its evolution. It also experiences distinct historical processes. Thus, the history of geographical thought as mother branch of geography is included universally in its curricula. All the social science disciplines with sociology, political science, economics, and demography study different aspects of social reality. Thus, branches of geography with social, political, economic, and populations and settlements are closely linked with these disciplines as each one of them has a special attributes, ठीक है। तो सबका अपना अपना रोल है, इसका जितना भी पार्ट है, और सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, कोई सब एक दूसरे के बिना अधूरा है, मानो एक तरह से बोल सकते हैं। लेकिन कुछ अधूरा नहीं भी है, क्योंकि अपना अपना भाई बात अलग है, सबका अपना अपना भाई अलग अलग बात है, सब में अलग हुनर है। द कोर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंसेस साइंस इज टेरिटरी। द कोर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज टेरिटरी। The core concern of political science is territory, peoples, and sovereignty, while political geography is also interested in the study of the state as a special unit as well as people and their political behavior। ये समझ नहीं आया, देखो क्या बोल रहा है, द कोर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज टेरिटरी, ओके, यानी कि वो बस उसके अंदर का ही पढ़ना, उसको टेरिटरी के भीतर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। पीपल्स एंड सोवर्जिनिटी वाइल पॉलिटिकल जियोग्राफी इज, जबकि पॉलिटिकल जियोग्राफी है, इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ द स्टेट एज ए स्पेशल यूनिट एज वेल एज पीपल एंड देयर पॉलिटिकल बिहेवियर। तो जो पॉलिटिकल जियोग्राफी भी होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स डील्स विथ बेसिक, जैसे कि पॉलिटिकल एक तरह से यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है अभी के टाइम में, पॉलिटिकल जियोग्राफी बिहार में भी रोल प्ले कर रहा है। एक तरफ आरजेडी, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ जनसराज, सब मिल के एक ऐसा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बना दिया, पॉलिटिकल जियोग्राफी वहाँ चल रहा है। जैसे कि बीजेपी जीत की भी नहीं जीत रहा है, क्योंकि उसने एक अलग अपना पॉलिसी अपनाया है कि नहीं अपनाया है, लग तो रहा है, ठीक है। तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। peoples and sovereignty, while political geography is also interested in the study of the state as a special unit as well as people। तो ऐसा नहीं है पॉलिटिकल जियोग्राफी को उससे मतलब नहीं है, पॉलिटिकल जियोग्राफी भी उसको एक यूनिट की तरह देखता है कि भाई इसको भी ध्यान देना है ना भाई, पॉलिटिकल क्यों टर्म आ रहा है उसमें, ठीक है। पॉलिटिकल बिहेवियर को भी नोटिस करता है, तब जाके पॉलिटिकल जियोग्राफी पे पढ़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स डील्स विद द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, इकोनॉमिक्स डील करता है बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द इकोनॉमी से, ठीक है, सच एज प्रोडक्शन, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, इन सब पे भी बहुत रिलाई करता है इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि इस साल कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उसके हिसाब से क्या कंजम्पशन रहेगा और क्या डिमांड हो जाएगा, क्या इतना डिस्ट्रीब्यूशन होना सही रहेगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टोर में रख देना चाहिए, कितना का हम लोग को एमएसपी देना चाहिए, कितना का हम लोग को ये कर देना चाहिए, जैसे फसल बर्बाद हुआ है तो
ये सब हो गया, एक्सचेंज हो गया, या फिर जो भी टर्म्स वगैरह आते हैं, तो ये सब इससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स में इन्हीं सब से रिलेटेड आता है, तो इन सब पे रिलाई करता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। नाउ द कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ईच ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स आल्सो स्पेशल एस्पेक्ट्स एंड हियर comes the role of economic geography. So after relying on these all sources, the another that is combo pack of this all is what is that? Economic geography, to study special aspects of production, distribution, exchange, and consumption. So in depth, this is called economic geography. Here we study about the economic causes, actually. Hmm. Causes, not the facts, only causes. Causes plus facts, facts also. Keep an eye on also facts. Because if you don't know, you are going to study the cell of which animal, how you can identify what is the result, and how you judge it. So this is important to know that what is the cell composed of, that is of which animal. So interface with nature and social insights. It also follows its own methodology of study, which makes it distinct from others. It has osmotic relationship with other disciplines. While all the disciplines have their own individual scopes, this individuality does not obstruct the flow of information, as in case of all cells in the body that have individual identity separated by membranes, but the flow of blood is not obstructed. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहा है कि while all the disciplines have their own individual scope, these individuality does not obstruct the flow of information, as in the case of all cells in the body that have individual identity separated by the membrane. But the flow of blood is not obstructed. Okay, geographers use data obtained from the sister disciplines and attempt synthesis over space. What does this mean? That is, वो लोग यानी कि scientists, that is actually scientists are uh, rely also on the 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 on those figures datas that is that come from the part of that is information resources, uh, information resources, actually, that is um, data of a scheduled pattern, repeating per pattern, and why it happens, the causes, pattern, the reality, fact check. So the scientists actually rely on those things. So come to the next point. This is not important. This is actual a um, just a understanding thing. You may also understand it naturally if you keep reading newspaper daily. Okay. So come to the next point. Maps are very effective tools of geographers in which the tabular data is converted into visual form to bring out a spatial pattern. Maps are very effective tools of geographers in which the tabular data is converted into visual form to bring out the spatial pattern. Branches of geography. Branches of geography. Please study figure 1.1 for recapitulation. Recapitulation. It has very clearly brought out that geography is an interdisciplinary subject of study. The study of every subject is done according to some approach. The major approaches to study geography have been systematic and regional. Second, regional. The systematic geography approach is the same as that of general geography. Okay, this approach was introduced by Alexander von Humboldt, a German geographer, 1769 to 1859,
while regional geography approach was developed by another German geographer as and a contemporary of Humboldt Karl Ritter 1779 to 1859. In systematic approach, figure 1.2, a phenomenon is studied world over. In systematic approach, In systematic approach, figure 1.2, a phenomenon is studied world over as whole, and then the identification of typologies or spatial patterns is done. For example, if one is interested in studying natural vegetation, the study will be done at the world level as a first step. The typologies such as equatorial terrain forest or softwood conical forest or monsoon as forests, etc., will be identified, discussed, and delimited. In the regional approach, in the regional approach, in the regional approach, the world is divided into regions at different hierarchical levels, and then all the geographical phenomena in a particular region are studied. The world is divided into regions at different hierarchical levels, and then all the geographical phenomenon is a particular region or studied. These regions may be natural, political, or design. Reason, the reason, designed, designated reason. The phenomenon in a region are studied in a holistic manner, searching for unity in diversity. Okay. Dualism is one of the main characteristics of geography which got introduced from the very beginning. The dualism depended on the aspect emphasis in the study. Earlier scholars laid emphasis on physical geography, but human beings are an integral part of the Earth's surface. They are parcel of nature. They are part and parcel of nature. They also have contributed to their cultural development, thus developed human geography with emphasis on human activities. So this point is confusing. But the human beings, earlier scholars laid emphasis on physical geography. Hmm. But human beings are an integral part of the Earth's surface. They are part and parcel of nature. They also have contributed through their cultural development. Okay, thus developed human geography with its emphasis on human activities. Branches. Now we come to the next topic: branches of geography based on systematic approach. So the first branch of the geography is based on systematic approach is the physical geography. Geomorphology is devoted to the study of landforms, their evolution. Physical geography, geomorphology is derived to study of landforms, their evolution, and related processes. Climatology encompasses the study of structure of atmosphere and elements of weather and climates and climatic types of regions. Hydrology studies the realm of water over the surface of the earth, including oceans, lakes, rivers, and other water bodies, and its effect on different life forms, including human life and their activities. So, okay, and the soil geography is devoted to the study processes of soil formation, soil types, and their fertility, status, distribution, and use. Okay. Now the come to the next topic: human geography. Next part. Physical geography is this: geomorphology, climatology, hydrology, and soil geography. These points are required to remember because these terms uh, probable that questions may be asked from these points.
and you may require these topics remain in your mind. Okay, so maybe like human geography, social or cultural geography encompasses the study of society and its spatial dynamics as well as the cultural elements contributed by the society, population, and settlement geography. 6 सेकंड for the society. Human geography में social और cultural geography हो गया. Encompasses the study of society and its spatial dynamics as well as the cultural elements contributed by the society. और सेकंड हो गया population settlement geography. That is rural and urban. It studies populations, growth and distribution density, sex ratio, migration and occupational structure, etc. They are the testing of rural and urban settlement. Economic geography studies economic activities of the peoples, including agriculture, industry, tourism, trade, and transport, infrastructure and services, etc. Economic geography studies economic activities of the people, including agriculture, industry, tourism, trade, and transport, infrastructure, and services, etc. The history the history the historical geography studies the historical processes through which the space gets organized. Every region has undergone some historical experiences before attaining the present day status. The geographical features also experience temporal changes in those form the concerns of historical geography. तो गाइस तो देखो ये रहा इसका ब्रांच वाला जो ये है. आज हम लोग इसी के इतना पढ़ेंगे, ठीक है. बाकी का पार्ट बाद में पढ़ेंगे. ऐसा बॉडी बहुत लंबा हो चुका है, शायद 1 घंटा 33 मिनट का हो गया है. ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच, फिजिकल प्रिंसिपल्स और फिलोसफी. फिजिकल प्रिंसिपल और फिलोसफी. ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी बेस्ड सिस्टमैटिक अप्रोच, फिजिकल प्रिंसिपल्स और फिलोसफी, methods and techniques, human. तो सो फर्स्ट सेकंड इज बेसिकली इसमें बहुत सारा पार्ट होता है. फिजिकल वाला हमने तो बताया भी कि अभी कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल जियोग्राफी हो गया, ठीक है. फिर से प्रिंसिपल्स और फिलोसफी वाले जियोग्राफिकल थॉट और ह्यूमन इकोलॉजी, land and human interactions, and in methods and techniques, cartography, field survey methods and techniques, human geoinformatics, GIS, GPS, RIS. सो ये तो थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है यार मेरे पे, ठीक है. थोड़ा समझना मुश्किल हो गया है थोड़ा सा. एक बार मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ इस चैप्टर को यहाँ तक कि फिर भी ये थोड़ा सा. ये देखो GIS, GPS, LIS ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक है. ये सबको हम इसमें पढ़ चुके हैं मेंस के पेपर में, ठीक है. नॉलेज जियोग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच, ठीक है. तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. पॉलिटिकल जियोग्राफी लुक्स एट द स्पेस फ्रॉम द एंगल ऑफ द पॉलिटिकल इवेंट्स एंड स्टडीज बाउंड्रीज, द स्पेस रिलेशंस बिटवीन द नेबरिंग पॉलिटिकल यूनिट्स, delimitations and constituencies, election scenario, and develops theoretical framework to. ओके, तो गुड नाइट, बाय बाय. आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं बाद में फिर इसी जोश के साथ. बाय.